नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाइकास्ट मॉडल कलेक्टर 88 के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज है डबल धमाल। डबल धमाल से मेरा मतलब है, जी हाँ दोस्तों, वी हैव देन एंड नाउ कलेक्शन ऑफ द निसान स्काईलाइन GT-R. टुवर्ड्स माय राइट इज द ओल्ड एडिशन 2000 GT-R Liberty Walk kit, which is then, and to my left I have the latest and the greatest Liberty Walk silhouette R35 GT-R version 2. बोथ देन एंड नाउ बेसिकली मॉडल्स जो रहते हैं, इनमें आप देखेंगे तो जो डीकैल्स है, जो पेंट है, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन एक तरफ होती है गाड़ी पुरानी और एक तरफ होती है सबसे नया मॉडल. सो लेट्स अनबॉक्स देम टुगेदर एंड सी हाउ द डिटेल्स लुक लाइक. लेट अस बिगिन विद द ओल्डर वेरिएंट, द निसान स्काईलाइन 2000 GT-R. वाओ, सो कूल यार. द ग्रे कलर, आय हाय हाय यार, ये होती है डिटेल. ब्यूटिफुल कार मैन, ब्यूटिफुल कार, ब्यूटिफुल डिटेल एंड ब्यूटिफुल लिबर्टी वॉक एज ऑलवेज. सो let's do one thing. Let's make this video a two-part video, and in the first part we will work out with the older car, and the next part will continue with the newer car. Okay, so let's start with the 2000 GT. As you can see, very nicely done. Small rims, wide body kit, Liberty Walk symbols, Liberty Walk logo, and we have a front splitter with turbos and grille intercooler seeing in the front. Headlamp design is nicely integrated. The car looks beautiful, man, beautiful. Like the duck spoiler and no tail lamp design. Oh my god, why Hot Wheels, why यार, एक लाल डॉट मार देते क्या जाता. Anyways, so this is what it is, man. Beauty in its details. I just can't wait to display this in my collection. मतलब यार, this thing makes me feel like a kid again. Like कर देना अगर आप लोग भी over, like I can say over 35 years old है and you are still in love with all these Hot Wheels, man. This thing brings back my childhood. So amazing यार, so amazing. बहुत सही है, बहुत अच्छी डिटेल्स हैं, और अच्छी हो सकती थी, which is my complaint and will always be. But nevertheless guys, nevertheless this is an awesome piece to display in your collection. और अगर इसके साथ आपके पास नया वाला मॉडल भी है जो कि ये वाला है, तो डेफिनेटली बहुत सही लगने वाला है. सो इसको हम अनबॉक्स करेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए ये रहा पहला एपिसोड में ये गाड़ी. ज़रूर लाइक करके बताइए कैसा लगा आपको, एंड डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट इट. तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डाइकास्ट मॉडल कलेक्टर 88. I'll see you soon in the next episode with the Liberty Walk R35 Nissan Skyline GT-R. Bye bye.